Join. Okay, now start. Today I'll teach differential equation of linear differential equation का part 2. Okay, linear differential equation. Okay, at the last class I have already taught you the first part of this linear differential equation, that is dy by dx plus p of y is equal to q. In this class I'll teach type 2, dx by dy plus p of x is equal to q. Okay, this type will cover now. So let's start. So right, differential equation in the form of dx by dy plus p of y is equal to q. Okay, देखो पी वाई नहीं, पी ऑफ एक्स, ये है पी ऑफ एक्स. ओके, ये होगा पी ऑफ एक्स. देन हाउ टू सॉल्व इट इन दिस टाइप ऑफ फॉर्म? हाउ कैन यू सॉल्व इट? टेल. वेट, हाँ, इसको फर्स्ट तुम लिखोगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में. फर्स्ट पॉइंट राइट, फर्स्ट यू हैव टू राइट, first you have to write in standard differential equation, that is dx by dy plus p of x is equal to q. Okay, then you have to find the integrating factor. Okay, first you have to write in standard form. If not is if this is not in the standard form, this is not in the standard form, then you have to bring to standard form. Okay, third point right, find the integrating factor. Find the integrating factor. What is the integrating factor of this equation? E to the power integration p dy. Integration p dy. p dy. Then final answer, how you write final answer? फाइनल आंसर लिखोगे कैसे? if dx by dy होगा, लिखो x इंटू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी. जब तुम आंसर निकालोगे इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे. ओके,
कंप्लीट. ओके. Question number 1, you write. Wait. X plus y dx by dy, sorry, dy by dx has to write. Question number 1, x plus y whole into dy by dx is equal to 1. Solve this differential equation. सब बच्चे क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा भी फायदा नहीं होगा. तुम्हारे क्लास से नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे. तो implies x plus y dy by dx. Is this equation is in standard form? No. If this is not in standard form, then you have to divide x plus y and then change the derivative value. Okay. X plus y 1 dy by dx is equal to 1 by x plus y. That means dx by dy is equal to 1 by x plus y. Okay. So implies dx by dy. Sorry. ऐसे नहीं करोगे, ऐसे ही करोगे. देखो यहाँ पर x प्लस वाई बाय होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स प्लस वाई. ओके. देन यू हैव टू डिवाइड x प्लस वाई यहाँ पर, तो कट जाएगा. क्या रहेगा वो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय एक्स प्लस वाई. हमको चाहिए क्या डी एक्स बाई डी वाई. तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जो एक्स प्लस वाई. ओके. इम्प्लाई डी एक्स बाई डी वाई minus x is equal to y. Okay. Which is in the form of, right, which is in the form of dx by dy plus p of x is equal to q, where p is equal to -1, q is equal to y. Then find the integrating factor. लिखो. Integrating factor is equal to e to the power integration p dy. जो इंटीग्रेशन e to the power इंटीग्रेशन कितना माइनस dy is equal e to the power minus integration dy e to the power minus y. Okay. E to the power minus y. So therefore the required solution of this differential equation is x into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dy plus c. x कितना, जो x तो x, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना e to the power minus y. q कितना y, इंटीग्रेटिंग में y e to the power minus y dy plus c. अब तुम फर्स्ट फंक्शन आइलेट, फर्स्ट फंक्शन ही है, सेकंड फंक्शन ही है. सिंपल x e to the power minus y is equal to फर्स्ट फंक्शन y इंटीग्रेशन e to the power minus y dy minus d by dy of y whole into integration e to the power minus y dy की whole dy plus c. Implies x e to the power minus y is equal to minus y e to the power minus y minus e to the power minus y dy plus c. ये होगा x e to the power minus y is equal minus y e to the power minus y plus e to the power minus y dy plus c.
x e to the power minus y is your minus e minus y e to the power minus y minus e to the power minus y plus c. Answer. Okay. Answer. So right. Complete. कंप्लीट हुआ तो बोलो, नेक्स्ट को मूव करूंगा अभी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. y dx नो इसको नहीं, x plus 3y square dy by dx is equal to y implies x plus 3y square derivative. Now dividing x plus 3y square on both sides of the equation, we get x plus 3y square divided by x plus 3y square dy by dx equals to y by x plus 3y square implies dy by dx is equal to x y by x plus 3y का square implies dx by dy is equal to x plus 3y का square divided by y. Okay. Right, right. अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो. dx by dy implies dx by dy is equal to x by y plus 3y square by y, 3y square by y. So implies dx by dy is equal to x by y plus 3y. dx by dy minus x by y is equal to 3y implies dx by dy minus p of x होगा. So 1 by y whole into x is equal to 3y which is in the form of dx by dy plus p of x is equal to q where p is equal to minus 1 by y, q is equal to 3. Okay, 3y. Therefore, integrating factor is equal to e to the power integration p dy.
e to the power integration minus 1 by y dy, e to the power minus integration dy by y, e to the power minus log mod y y, e to the power log y inverse, that means y inverse equals to 1 by y. Therefore required solution of this differential equation x into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c. X into integrating factor 1 by y is equal to q in 3y integrating factor 1 by y dx plus c. So यहाँ पर dy, so implies x by y is equal to 3 dy plus c, implies x by y is equal to 3y plus c. यहाँ पर लिखो, यहाँ पर आंसर 3x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy आंसर. ओके, सभी बच्चे क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा. तुम्हारे क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे. कंप्लीट. Then question number 3. X plus 2y cube dy by dx is equal to y. कैसे करोगे? Implies x plus 2y cube dy by dx is equal to y. dy by dx is equal to y by x plus 2y cube. I have divided on both sides. Then dx by dy is equal to x plus 2y cube by y. Implies dx by dy equal to x by y plus 2y cube by y. Implies dx by dy is equal to x by y plus 2y square. So dx by dy minus x by y is equal to 2y square. Dx by dy minus 1 by y of x is equal to 2y square, which is in the form of dx by dy plus p of x is equal to q, where p is equal to minus 1 by y, q is equal to 2y square. Okay. Yusuf 1 AI, tell what happened. Therefore, integrating factor tell what happened. Integrating factor is equal to क्या 9. Integrating p dy e to the power integration p dy e to the power integration p की minus 1 by y dy. What 9? dy by y e to the power minus log mod y e to the power log mod y inverse. ये लॉग कैंसिल हो जाए, y इनवर्स, दैट मीन्स 1 by y. लिखो, मैं अभी पेज चेंज करूँगा. कंप्लीट. नेक्स्ट
Therefore, required solution of this differential equation is equal to x into integrating factor is equal to q into integrating factor dy plus c imply x into integrating factor 1 by y is equal to q कितना, यहाँ पर q कितना, q 2y square integrating factor 1 by y dy plus c, यहाँ पर x by y is equal to integration 2y dy plus c, there is x by y is equal to 2 integration y dy plus c. Okay, x by y is equal to 2 into y square divided by 2 plus c, 2 to cancel, x equals to x by y is equal to y square plus c into x equals to y cube plus cy. Complete. Then क्वेश्चन नंबर 4 है ये 1 plus y square plus x minus e to the power tan inverse y dy by dx is equal to 0. लिखो 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 so implies 1 plus y square plus x minus e to the power tan inverse y dy by dx is equal to 0. तो कैसे करोगे इसको, सिंपली 1 प्लस वाई स्क्वायर dx by dy plus x is equal to e to the power tan inverse x. I have direct learned, okay. Then you have to divide 1 plus y square on both sides of the equation, dividing 1 plus y square on both sides of the equation, we get 1 plus y square divided by 1 plus y square dx by dy plus x by 1 plus y square is equal to e to the power tan inverse x by 1 plus y square. In dx by dy p of x होगा 1 by 1 plus y square whole into x, so e to the power tan inverse x by 1 plus y square, which is in the form of dx by dy plus p of x equals to q. लिखो सभी चैनल क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करने से
तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट, where p is equal to 1 by 1 plus y square, q is equal to e to the power tan inverse x by 1 plus y square. So therefore integrating factor is equal to integrating factor is equal to y in, sorry, integrating factor is equal to e to the power integration p dy, e to the power integration 1 by 1 plus y square dy, e to the power tan inverse x. So therefore required solution is equal to x into integrating factor is equal to q into integrating factor dy plus c. So x e to the power tan inverse x equals to q कितना, e to the power tan inverse x by 1 plus y square into 1 by 1 plus y square, q कितना, e to the power tan inverse 1 plus y square into integrating factor कितना, only 1 plus y square, okay, dy plus c, ये tan inverse y होगा। ओके, मैं फर्स्ट again I am writing into e to the power tan inverse y, जो इंटीग्रेशन e to the power tan inverse ये है y, ओके, e to the power tan inverse y by 1 plus y square into 1 plus y square dy plus c, इसको काट लो, x e to the power tan inverse y और इंटीग्रेशन e to the power tan inverse y dy plus c। ओके, कोई गड़बड़ करा मैंने क्या, m1 प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ये सब काटो, इनमें x क्या, x इंटू इंटीग्रेटिंग है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना, e टू द पावर tan इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e टू द पावर tan इनवर्स y, ओके, dy प्लस c, x e to the power tan inverse y is equal to integration e to the power tan inverse y into e to the power tan inverse y divided by 1 plus y square plus c। यहाँ पर लेट tan inverse y को ले जाओ t, 1 by 1 plus y square dy is equal to dt, यहाँ पर dy लिखो, x e to the power tan inverse y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर टी इंटू e टू द पावर टी डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी होता है प्लस सी, इम्प्लाइज x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2t डी टी प्लस सी, इम्प्लाइज x e टू द पावर tan इनवर्स y 1 by 2 e टू द पावर 2t प्लस सी, इम्प्लाइज x e टू द पावर tan इनवर्स y केवल 1 by 2 e to the power 2 into tan inverse y plus c। ओके, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुम्हारे फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारे क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। ओके, कंप्लीट।
Next, question number 5. Two x minus 10y cube. I think I have done now. X plus 12 cube. It's 9. No, I have not done. 2x minus 10y cube dy upon dx plus y is equal to 0. लिखो implies 2x minus 10y cube dy by dx plus y is equal to 0. Now write dividing 2x minus 10y cube on both sides of the equation, we get 2x minus 10y cube dy by dx plus y divided by 2x minus 10y cube is equal to 0 by 2x minus 10y cube. ओके, ये हो जाएगा 2x minus 10y cube dy by dx by 2x minus 10y cube plus y by 2x minus 10y cube is equal to 0. Implies dy by dx plus y by 2x minus 10y cube is equal to 0. Plus dy by dx equals to minus y by 2x minus 10y cube. Implies dx by dy is equal to minus 2x minus 10y cube by y. Here dx by dy minus 2x by y plus 10y cube by y implies dx by dy minus 2x by y plus 10y square. Dx by dy plus 2x by y is equal to 10y square, which is in the form of dx by dy plus p of x is equal to q, where p is equal to 2 by y, q is equal to 10y square. लिखो कंप्लीट. मैं पेज चेंज करूँगा. नेक्स्ट integrating factor is equal to e to the power integration p dy. implies e to the power integration p कितना 2 by y dy इंटीग्रेशन e to the power 2 इंटीग्रेशन dy by y. क्यों 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया. 2 log mod x e to the power log x square is equal to x square. Therefore, required solution of this differential equation x into integrating factor
इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर होता है, क्यू कितना 10y², क्यू कितना 10 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना सर ये log y², ये log y, ओके, ये log y, ये y², यहाँ पर y² डी वाई प्लस सी इम्प्लाई XY² इज इक्वल टू 10y⁴ डी वाई प्लस सी, XY² इज इक्वल टू 10 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन y⁴ डी वाई प्लस सी इम्प्लाई XY² इज इक्वल टू 10y⁵/5 प्लस सी, XY² इज इक्वल टू 2y⁵ प्लस सी, x is equal to 2y³ plus cy⁻² आंसर कंप्लीट। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। ओके कंप्लीट। Then we'll move to next question, question number 6. Question number 6. X plus y plus 1 dy by dx is equal to 1. इस क्वेश्चन को मैं मेथड नंबर 2 के द्वारा मैं सॉल्व किया था इन प्रीवियस क्लास। इस क्वेश्चन को मैं मेथड नंबर 1 को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx by dy प्लस p of x इज इक्वल टू q। ओके, तो कैसे करेंगे? इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस 1 dy by dx इज इक्वल टू 1, right? Dividing x plus y plus 1 on both sides, we get x plus y plus 1 dy by dx by यहाँ पर हो जाएगा x plus y plus 1 is equal to 1 by x plus y plus 1। ये जब कट जाएगा dy by dx बच जाएगा, तो 1 by x plus y plus 1। अब रेसिप्रोकल मारो तो क्या हो जाएगा dx by dy जो x plus y plus 1। सो dx by dy माइनस x, जब dx यहाँ पर है तो x यहाँ पर आ जाएगा y plus 1, which is in the form of Shivam Pandey told her. Yes, tell what happened. Which is in the form of dx by dy plus p of x is equal to q, where p is equal to -1, q is equal to y plus 1. Therefore, integrating factor integrating factor is equal to e to the power p dy, e to the power minus dy, e to the power minus integration dy, e to the power minus y.
So therefore required solution of these differential equation we get x into integrating factor, well q into integrating factor dy plus c. तो x into integrating में x e to the power minus y is equal to q कितना y plus 1, ये e to the power minus y dy plus c implies x e to the power minus y e to the power minus y plus e to the power minus y dy plus c. फर्स्ट लिखो ये पेज चेंज करूँगा पेज क्लास को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने से तुम्हारे फायदा होगा मेरा कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे ओके नेक्स्ट तो implies x e to the power minus y is equal to integration y e to the power minus y dy plus integration e to the power minus y dy plus c x e to the power minus y यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन y e to the power minus y dy minus dy of y whole into e to the power minus y dy whole dy plus integration e to the power minus y dy plus c x e to the power minus y ये माइनस y टू द पावर माइनस y माइनस ये हुआ माइनस e टू द पावर माइनस y dy ये होगा माइनस e टू द पावर माइनस y प्लस c x e टू द पावर माइनस y माइनस y e टू द पावर माइनस y माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस y dy माइनस e टू द पावर y प्लस c ये होगा x e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस y e टू द पावर माइनस y माइनस e टू द पावर माइनस y माइनस e टू द पावर y प्लस c ये होगा x e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस y e टू द पावर माइनस y माइनस 2 e टू द पावर माइनस y प्लस c यहाँ पर e टू द पावर माइनस y डिवाइड करो माइनस y e टू द पावर माइनस y माइनस 2 e टू द पावर माइनस y प्लस c डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस y x इक्वल्स टू माइनस y e टू द पावर माइनस y बाय e टू द पावर माइनस y माइनस 2 e टू द पावर माइनस y बाय e टू द पावर माइनस y प्लस c बाय e टू द पावर माइनस y x इक्वल्स टू माइनस y माइनस 2 प्लस c e टू द पावर माइनस y x इक्वल्स टू माइनस कॉमन आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस c टू द पावर माइनस y और x प्लस y प्लस 2 इक्वल c e टू द पावर माइनस y आंसर पब्लिक अब इसका मैं टाइप नंबर 2 पढ़ाऊंगा
टाइप नंबर 2 क्या क्या होगा देखो, इसका नंबर 2 dx बाई डी वाई प्लस पी एफ एक्स इक्वल क्यू का ही टाइप नंबर 2, dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू का ही टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होता है। क्वेश्चन इज वाई डी एक्स सॉरी क्वेश्चन इज वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। Before solving this question, लाइक शेयर सब्सक्राइब द क्लास। ओके, सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे क्लास से नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। आयन शर्मा told her yes 12 implies y dx plus x minus y square dy is equal to 0. Can I tell you a question? Yes, tell. Okay. x प्लस सॉरी यहाँ पर x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई implies minus x by y minus y square by y is equal to dx by dy is equal to minus x by y minus y is equal to dx by dy implies dx by dy जब वहाँ पर चला जाएगा प्लस हो जाएगा x by y is equal to minus y dx by dy p of x p कितना 1 by y of x is equal to minus y, which is in the form of dx by dy plus p of x is equal to q, where p is equal to 1 by y, q is equal to minus y. So therefore integrating factor is equal to e to the power integration p dy, e to the power integration p की 1 by y dy, e to the power log mod y at y. Therefore required solution of this differential equation we get x into integrating factor। तुम कौन सा क्लास में हो आयंस? ये तो 10th क्लास का मैथ है ना। तुम कौन से क्लास में हो? इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। तुम 10th क्लास में हो? x are you in 10th क्लास? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y होता है, तो q कितना है माइनस वाई, यहाँ पर y dy प्लस सी। अरे आयंस आर यू इन 10th क्लास? हाँ यस। सुनो, इस मैं अभी 12th क्लास को मैथ पढ़ा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सॉल्व करूँगा यदि तुम चाहो तो। ओके, अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, अभी मैं 12th क्लास के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
Right. Next question. Next step, not question. Implies xy is equal to integration minus y square dy plus c. Implies xy is equal to minus integration y square dy plus c. Implies xy is equal to minus y cube by 3 plus c. Implies x equals to minus y square by 3 plus c. यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी वाई, यहाँ पर हो जाए 3x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी वाई, एम्प्लाइज 3x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई. आंसर कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 1 plus y square dx is equal to tan inverse x minus y dx. लिखो लिखो. क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा. तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन कोई जान पाओगे. लिखो लिखो. Okay, we'll start. Question is 1 plus y square dx is equal to tan inverse x minus y dx. ना दो से dx किया, यहाँ पर dy होगा. ओके, ये dy, ये dy. ओके, implies dx by dy is equal to tan inverse x minus y by 1 plus y square. ये x है. कौन क्वेश्चन लिख रहा है? ये x होगा, ये x होगा. ओके, implies dx by dy is equal to tan inverse सब y, यहाँ पर भी y होगा, यहाँ पर भी y होगा. ओके, tan inverse y by 1 plus y square minus x by 1 plus y square. So dx by dy plus x by 1 plus y square is equal to tan inverse y by 1 plus y square. So dx by dy p of x 1 by 1 plus y square whole into x is equal to tan inverse y by 1 plus y square. So there, which is in the form, alright, which is in the form of dx by dy plus p of x equals to q, where p is equal to 1 by 1 plus y square, q is equal to tan inverse y by 1 plus y square. Now you find the integrating factor. Integrating factor, you can find it now. क्या अपडेट क्यों नहीं हो रहा? Now integrating factor is equal to
e to the power integration e to the power integration p dy e to the power p कितना है 1/1 plus y square 1/1 plus y square dy e to the power tan inverse y. Therefore required solution is equal to x into integrating factor is equal to q into integrating factor dy plus c x e to the power tan inverse y is equal to q कितना tan inverse y 1 plus y square tan inverse y by 1 plus y square into e to the power tan inverse y dy plus c. Now let tan inverse y को ले जाओ z 1/1 plus y square dy is equal to dz x e to the power tan inverse y is equal to tan inverse y को ले जाओ z e to the power z dz plus c x e to the power tan inverse y is equal to z integration e to the power z dz minus d by dz of z इंटीग्रेशन e to the power z dz का होल dz x e to the power tan inverse y is equal to e to the power z minus e to the power z dz ये प्लस सी होगा z फर्स्ट फंक्शन आई लेट सेकेंड फंक्शन z e to the power minus dy z of z e to the power z e to the power z e to the power z यहाँ पर z e to the power z होगा ओके x e to the power tan inverse y is equal to z e to the power z minus e to the power z plus c so x e to the power tan inverse y होगा z कितना tan inverse y e to the power tan inverse y minus e to the power tan inverse y plus c which is your final answer. Okay. Complete. लिखो लिखो now question number 9 x plus tan y dy is equal to sin 2y dx. Okay, implies x plus tan y dy is equal to sin 2y dx. x plus tan y by sin 2y is equal to dx by dy implies dx by dy is equal to x plus tan y by sin 2y implies dx by dy equal to x by sin 2y
प्लस tan y बाय साइन 2y। लिखो। कंप्लीट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, लिखो। ओके, नाउ dx बाय dy माइनस x बाय साइन 2y इज इक्वल टू tan y बाय साइन 2y implies dx बाय dy माइनस 1 बाय साइन 2y whole into x is equal to tan y by sin 2y, which is in the form of dx by dy plus p of x is equal to q, where p is equal to minus 1 by sin 2y is equal to minus cosec 2y, q is equal to tan y by sin 2y। ओके, अब इसको tan y बाय 2 tan y बाय 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू tan y बाय 2 tan y इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर y बाय tan y इक्वल 1 प्लस ये 2 है। ओके, 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर y। अच्छा नहीं, ये 2/1 है, ये 1/2 हो जाएगा ना, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 सेक स्क्वायर वाई। सो देयर फोर पी का वैल्यू कितना, माइनस कोसेक 2y क्यू इज इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर वाई। अब शुरू होता है यहाँ पर लफड़ा। लिखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to e to the power integration p dy, e to the power integration minus cosec 2y dy, e to the power integration minus integration cosec 2y dy, cosec 2y dy। अब बताओ यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the power minus 1/2 ln mod cosec 2y minus cot 2y। डायरेक्ट फार्मूला नॉट ओके। e to the power ln ये होगा रूट ओवर ऑफ इस 1/2 चला जाएगा यहाँ पर, तो वहाँ पर रूट हो जाएगा, माइनस चला जाएगा अंदर। ओके, कोसेक 2y प्लस कॉट 2y, तो ई लर्न कट जाएगा, क्या रहेगा, कोसेक 2y प्लस कॉट 2y। अच्छा, कोसेक 2y को कैसे लिखोगे, 1 बाय साइन 2y, कॉट 2y को कैसे लिखोगे, कॉस 2y बाय साइन 2y। लिखो, लिखो लिखो। सो रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2y बाय साइन 2y इज इक्वल रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos 2y बाय साइन 2y इज इक्वल इंटीग्रेशन इज रूट ओवर ऑफ cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर y बाय साइन 2y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर y बाय ये हो जाएगा 2 साइन y cos y। यहाँ पर 2 कट जाए, ये cos y कट जाएगा, तो रहेगा क्या, cos y बाय साइन y इज इक्वल टू रूट कॉट। ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लिखो सॉल्यूशन क्या होगा।
Therefore, the required solution is equal to x into integrating factor is equal to इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, ये है फॉर्मूला। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, रूट कॉट वाई, x रूट कॉट वाई इज इक्वल टू q कितना 1/2 सेक स्क्वायर वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना रूट कॉट वाई dy प्लस सी, एक्स रूट कॉट वाई इज इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन ये होगा सेक स्क्वायर वाई बाय रूट tan वाई डी वाई प्लस सी। अब लेट tan वाई को ले जाओ जेड, सेक स्क्वायर जेड सो सेक स्क्वायर वाई डी जेड, सो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी जेड implies x root cot y equal 1/2 integration dz by root z plus c. So x root cot y is equal 1/2 integration z to the power minus 1/2 dz plus c. X root cot y is equal 1/2 into z to the power minus 1/2 plus 1 is कितना 1/2 by 1/2 plus c, x root cot y equal 1/2 into 2 root z plus c implies x into root cot y is equal to root z plus c. ओके, तो फाइनल आंसर यहाँ पर राइट आंसर x इंटू रूट कॉट वाई इज इक्वल वाई कितना, सॉरी जेड कितना tan वाई, तो रूट tan वाई प्लस सी आंसर। ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। स्क्वायर डी एक्स खत्म हो गया क्या, मुझे tan इनवर्स एक्स माइनस लिखो लिखो कंप्लीट। सुनो, बर्नौलीज इक्वेशन सिलेबस में तुम्हारा नहीं है, यदि होगा मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा बर्नौलीज इक्वेशन, यदि होगा, यदि नहीं होगा तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, मैं सिलेबस ओरिएंटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। ओके, तुम्हारा दो तीन क्लास और लगेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होने के लिए, क्योंकि ना होमोजेनस हेट्रोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन 3 से 4 क्लास लगेगा, नहीं 3 क्लास लगेगा और एक क्लास मिसलेनियस होगा। ओके, तो 4 से 5 क्लास और लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होने के लिए। ओके, यदि मैं दो घंटे क्लास लूँगा, मैं 3 से 4 क्लास के जगह में 2-3 क्लास में ख़त्म कर दूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। बर्नौलीज इक्वेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, यदि होगा मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा। ओके, ये अब तक तो नहीं है। ओके, यदि एनी एग्जामिनेशन बोर्ड ऐड करेंगे
तो अभी जाकर मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो तुम्हारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं और बचा। ओके, तुम्हारा लेफ्ट किया हुआ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हेटेरोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक और वाट प्रॉब्लम्स बच्चा है। ओके, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो सैटरडे को फिर मुलाकात होगा। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा फायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। ओके, सो जो भी बच्चे लाइव दिख रहे हैं या रिकॉर्डेड में दिख रहे हैं, सभी बच्चे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड हैव ए नाइस डे।